Welcome everyone. First of all, I want to thank all of you from the bottom of my heart for being here with me. I'm Sanya Sharma, an IELTS tutor, and I'm going to give you a demo session of my classes which are called Fluent Factory. Now, I will take some time to share about me and my language journey, and I hope आप भी उससे relate कर पाएंगे. I belong to Firozpur, which is a small city in Punjab. And when I was in my learning years, बहुत रेयर होता था स्कूल में इंग्लिश में कोई बात करे, इवन टीचर्स भी. इनफैक्ट इंग्लिश टीचर्स भी सिर्फ इंग्लिश लेसन पढ़ाते हुए ही यूज करते थे. सो आई मीन टू से कोई सोर्स स्कूलिंग में तो नहीं था जहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सके, और सेम कंडीशन थी कॉलेजेस में भी. So how did I actually manage to learn communicating in English? The answer is I started living in English. लिविंग इन इंग्लिश मतलब जो चीजें मुझे करनी पसंद है मैंने उनको इंग्लिश में करना शुरू किया, जैसे कि वॉचिंग शोज. टीवी देखना मेरा फेवरेट है. These days I'm watching Netflix more, लेकिन जो भी कंटेंट मैं देखती हूँ I watch it in English. Yes, शुरू में समझ में नहीं आएगा, but gradually you will see आप unconsciously English words और sentences को अपनी daily language में यूज कर रहे हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा how that change happened without putting much efforts. ये तो तरीका था जो सबसे easy है. Next thing that worked for me was I was working in a company जहाँ US के clients के साथ बात करनी पड़ती थी. That means जब आप native speakers के साथ, मतलब जो English में ही बात करते हैं, उन लोगों से conversation करते हो, you learn a lot. Trust me, आपकी pronunciation और आपकी fluency में dramatic change आता है. आप भी ये ऑप्शन का एडवांटेज ले सकते हैं. आजकल बहुत सारी एप्स हैं जो आपसे इंग्लिश में बात करती हैं एंड हेल्प्स यू टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश. अदरवाइज आप भी खुद को जितना हो सके इस एनवायरनमेंट में लेकर जाएं जहां इंग्लिश का यूसेज होता हो. आई नो हमारे एरियाज में इट्स लाइक अ टैबू. सबके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कोई है ही नहीं बात करने वाला इंग्लिश में. बट गाइस, कोई ना कोई जरूर होगा जो आप ही की तरह इंटरेस्टेड होगा अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए. और मे बी इफ यू हैव किड्स, उनके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. इससे आपको डबल एडवांटेज मिलेगा, जिससे बच्चे भी सीख जाएंगे एंड यू विल लर्न एज वेल. इजंट दैट आइसिंग ऑन द केक? एक और तरीका है, दैट इज टू अटेंड द क्लासेस फॉर विच यू आर हियर. यू वांट अ कोर्स जिसमें आपको ये सिखाया जाए व्हाट how to communicate in English, or maybe आप यहाँ IELTS के लिए आए. Anyhow, the ultimate goal of all of you is to ace English. There is a saying, one size doesn't fit all. Let's take example of shoes. क्या एक shoe size हर कोई पहन सकता है? Obviously no, right? तो हर कोई student same lesson से कैसे सीख सकता है? हर student की अपनी needs, अपनी strengths, अपनी weaknesses और अपना learning style होता है. कोई बार बार याद करके सीखता है तो कोई एक ही बार में देख के उसको ग्रैब कर लेता है. किसी को शोज देखकर इंग्लिश सीखना पसंद है और किसी को दूसरों से इंग्लिश में बात करके. और कुछ लोग इंट्रोवर्ट्स होते हैं जो इसलिए इंग्लिश में बात नहीं कर पाते क्योंकि उनको नर्वसनेस होती है किसी से भी बात करने में. ये नहीं कि उनको इंग्लिश नहीं आती, इट्स जस्ट दे कांट टॉक मच विद अदर पीपल. मीनिंग हर किसी को अगर उनके अकॉर्डिंग सिखाया जाए तो चांसेस 90% बढ़ जाते हैं कि आप जो चीज उनको सिखाना चाहते हैं उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे. That's why I have started this personalized program in Fluent Factory, जिसमें आपकी यूनिक नीड्स के ऊपर फोकस किया जाएगा. The question now is, how am I going to do it? सबसे पहले हर स्टूडेंट जो इस प्रोग्राम में इनरोल करेगा उनका इवैल्यूएशन होगा and we will see what your level is. After evaluation, I will pinpoint your areas on which हम work करेंगे आपकी communication skills को improve करने के लिए. General topics जो होंगे जिसमें maximum students challenge face कर रहे हैं उनका collective session होगा, और जो topics को individual need होगी उसके लिए आपके personalized sessions लिए जाएंगे. There will be monthly evaluations ताकि पता लग सके कि आपने कितना improve किया है. Moreover, इस प्रोग्राम में आपको constructive feedback जरूर मिलेगा, जो कि I think most of the coachings में missing रहता है. इसमें सिर्फ आपकी weakness को बताया नहीं जाएगा, साथ में आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे.
जिसकी हेल्प से आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। The material which will be provided to you will be similar to actual IELTS tests. Spoken English के लिए भी जो resources use किए जाएंगे that will be useful in real life circumstances. That means आप अपनी daily life में उनको use कर सकते हैं and can easily enhance your personality. Overall, you will be provided with the best approach to learn English. मेरे साथ यहाँ आप different apps एंड टेक्नोलॉजीज को यूज करेंगे अपनी लैंग्वेज को अपस्किल करने के लिए। आई एम श्योर आप सबको एआई टेक्नोलॉजी के बारे में पता होगा। जिनको नहीं मालूम है, लेट मी अवेयर यू अ लिटिल बिट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज कम अ लॉन्ग वे और आप मशीन के साथ बात करके भी अपनी लैंग्वेज इंप्रूव कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट है, आपको स्कोर भी किया जाएगा और आपके मिस्टेक्स भी बताई जाएंगी। नेक्स्ट, let's conduct a short demo what my personalized session will look like. Today I am going to conduct your speaking test. Usually the speaking test has 3 parts. First is introduction and interview. Second is cue card, that means a short speech. Third one is discussion. So for today's demo session I am going to take the first part and you will be given some interview questions which you have to answer. Okay, let's start with it. Can you tell me about your hometown? What do you like most about it? Okay, my hometown is Punjab. My city name is Pathankot. It is located in the northern part of India. It's a plain area. It's a very beautiful place. Everything is available for this residence. I really love and enjoyed in my hometown because a lot of memory is there with me and I spend a lot of quality time with theirs. Okay. How often do you use the internet? What kind of websites do you visit? Yes, I use the internet. During the daytime I use it for my study purpose and in night I use it for social media. The very favorite website, my website that is for food because I love to cook. I love to cooking food, and I always want to prepare best meal for my family. Okay. What type of leisure activities do you enjoy? Okay, in my leisure time, I love to listening the music, taking the photographing of nature, and dancing, etc. Do you prefer indoor or outdoor activities and why? According to me, I prefer outdoor activity because I really love to enjoy outdoor because I love the nature and I feel I'm very comfortable in surrounding. Okay, that's the end for part 1. Okay, let me give you the feedback now, Gunjan. Yes. Okay, so for the speaking test, you should know आपको 4 factors से जज किया जाता है। आपको 4 factors पे marks दिए जाते हैं। सबसे पहले consider किया जाता है fluency and pronunciation, right? So that means fluency, आप कितना अच्छे से बोल रहे हैं, right? कितने कम pauses ले रहे हैं और आपका content पूरा है या नहीं है या topic से related है या नहीं है, बात कर रहे हैं जो। So that is considered जब आपकी फ्लुएंसी के ऊपर आपको मार्क्स दिए जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी, जो आपकी फ्लुएंसी थी, आई वुड नॉट स्कोर यू मोर देन 7 बैंड्स फॉर इट बिकॉज देयर वर पार्ट्स जब आप हेजिटेट कर रहे थे बीच में। यू वर ओवरऑल गुड, बट आई थिंक आई कैन ओनली स्कोर यू 7 बिकॉज ऑफ द हेजिटेशंस पार्ट, बिकॉज ऑफ द साइलेंसेस इन बिटवीन, राइट? एंड अबाउट द प्रोनाउंसिएशन, नेक्स्ट प्रोनाउंसिएशन इज़ अ गुड फैक्टर जो कंसिडर किया जाता है आपकी स्कोरिंग में आइल्स स्पीकिंग टेस्ट में। सो द वे यू से सिंपल वर्ड्स, यू हैव टू से द सेम योर आंसर इन द सेम मैनर, बेसिकली ऐसे करना होता है। तो बेसिकली आपके जो वर्ड्स आपने प्रोनाउंस किए हैं, इट वॉज ऑल गुड. I didn't find any problem with the words you recited today in the speaking test. So you were good about it. Next, that is the factor that is judged is vocabulary, the lexical resource. So lexical resource means आपने कितने different range of words use किए हैं, vocabulary use की है. हमारे अभी इस टेस्ट में
I didn't find many good words in your answer, but the structuring were good, the paraphrasing was good. So I believe you can improve on that. You should add more good vocabulary words. I can give you an example. For example, the first question was, can you tell me about your hometown? What do you like most about it? So you were telling different things about your hometown. So you were telling about the different kind of facilities you have. So use the word vicinity. In my vicinity, everything is available from pin to plane. Okay, from pin to plane, this is a phrase you can use. Vicinity is a good word. So if you add these good vocabulary words in your answer, most probably your scores will increase. Okay. Next, the last thing that is considered in the speaking test is grammatical range and accuracy. So your structuring were good, okay, and you used there were minor errors in your answer. Yes, ma'am. And that can easily be avoided. I think आप उसको easily avoid कर सकते हैं ताकि आप better score करें अपने टेस्ट में. And it would be better, आप ज़्यादा अच्छे से स्कोर कर सकते हैं अगर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी अपने आंसर में यूज़ करेंगे. It's gonna be better. So you should know what kind of question it is and how you are going to answer it. Part 1 में mostly इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं. There are personal questions. For example, अपने होम टाउन के बारे में बताना है आपको. So you have to tell about the details. Now next question is how often. How often do you use the internet? This is the question. That means how many times. तो इसका आंसर अलग तरीके से हो सकता है. कुछ लोग हैं जो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं. सो दे कैन से नेवर. कोई चीज़ें हैं जो आप कभी नहीं करते, यू यूज़ द वर्ड नेवर. कोई चीज़ें हैं जो आप कभी कभार करते हो, यू डोंट डू इट रेगुलरली, उसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हो सेल्डम. राइट, सेल्डम, रेयरली, वंस इन अ ब्लू मून. ओके, दीज वर्ड्स यू यूज़. नेक्स्ट, कुछ चीज़ें हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे करते हो, डेली. राइट, सो you can, they are talking about the internet, so you can say daily I use the internet for various purposes, for plenty of purposes. There are multiple words you can use, good words. तो आपको पता होना चाहिए जो आपका आंसर है उसमें कौन सा वर्ड फिट बैठेगा इसके अंदर. नेक्स्ट इज, they were talking about your favorite leisure time activities, your hobbies basically. So you can have plenty of activities. You can talk about reading books, you can talk about listening to music, gardening, whichever you can. Okay. Next, do you prefer indoor or outdoor activities? That means they are asking about you are given with two options and you have to choose one out of it. And you have to give a solid reason why you chose the one. जब भी आपको दो options मिलते हैं तो उसको आपने आंसर करना है. तो आप कैसे आंसर कर सकते हैं? देर इज़ अ वर्ड कॉल्ड फॉर्मर, देर इज़ अ वर्ड कॉल्ड लेटर. ओके, फॉर्मर का मतलब है जो पहले बताया गया है ऑप्शन. मेरे को रिपीट करना है. फॉर्मर का मतलब है जो पहले बताया गया है ऑप्शन. फॉर एग्जाम्पल, इंडोर पहले बताया गया है, सो यू कैन से आई प्रेफर द फॉर्मर ऑप्शन, मतलब फर्स्ट ऑप्शन. Otherwise you can say I prefer the latter option. Okay, ये जो second option आपने दिया है, I prefer that one. So that is a good vocabulary word you can use in your answer. I prefer the latter one, the outdoor activities one. I prefer to get indulged in the outdoor activities because it relaxes my mind and it soothes my soul. So, and it helps me to reduce the anxiety levels or something like that. Yes, ma'am. Okay, so you can have different vocabulary words added in your answer. Yes, ma'am. So that's all about. Now let's talk about IELTS, pronounced as IELTS, ST is silent, and full form is International English Language Testing System. ये ऐसा टेस्ट है जो कि पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड है. एंड इस टेस्ट का पर्पस है ये इवैल्यूएट करना कि अगर आप किसी ऐसी जगह चले जाते हैं जहां इंग्लिश में बात करते हैं लोग, वहां आप सरवाइव कर सकते हो या नहीं. ये कोई नॉलेज टेस्ट नहीं है, इट्स जस्ट योर लैंग्वेज टेस्ट. स्टूडेंट्स फॉरेन जाने के लिए इसलिए देते हैं ताकि वहां जब टीचर इंग्लिश में पढ़ाएंगे
तो वो उनको समझ सके। और जब आप उस कंट्री में रहोगे तो आप वहाँ के लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सके। प्रोफेशनल्स भी सेम रीजन से देते हैं ताकि जहाँ वो काम करेंगे वहाँ के कॉलीग्स के साथ वो कम्युनिकेट कर सके। टेस्ट के 4 मॉड्यूल्स होते हैं: लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। लिसनिंग टेस्ट में आपकी एबिलिटी को चेक किया जाता है कि आप इंग्लिश में की गई कन्वर्सेशन को कितना समझ सकते हैं। रीडिंग में ये चेक किया जाता है कि आप इंग्लिश में रिटन टेक्स्ट को कितना अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। स्पीकिंग टेस्ट में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को 4 फैक्टर्स के अकॉर्डिंग चेक किया जाता है: आपकी फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी एंड ग्रामर। राइटिंग टेस्ट में आपकी राइटिंग एबिलिटी को भी 4 पैरामीटर्स के साथ इवैल्यूएट किया जाता है। टास्क अचीवमेंट मींस आपने 250 वर्ड्स का ऐसे लिखा है या नहीं, आपने टॉपिक के ऊपर लिखा है या नहीं। सेकेंड है कोहेरेंस एंड कोहेजन, मीनिंग ऐसे का फ्लो होना चाहिए। राइट पॉइंट्स के बारे में राइट प्लेस में लिखा हुआ है या नहीं। नेक्स्ट अगेन इज वोकैबुलरी एंड देन ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। इन आवर सेशंस यू विल लर्न टू मैनेज टाइम इफेक्टिवली ड्यूरिंग टेस्ट, जो कि सबसे बड़ा इशू रहता है मोस्टली टेस्ट टेकर्स का। नेक्स्ट, नो डाउट रेगुलर प्रैक्टिस कराई जाएगी हर मॉड्यूल की रेलेवेंट मटेरियल के साथ। वोकैबुलरी के ऊपर मेन फोकस रहेगा। That means daily we will make sure you're adding good words in your list to use on the test day. And lastly, the one thing which is hard to find somewhere else, it's personal sessions. So this is all about IELTS. Now let's talk about spoken English, which is basically a sub part of IELTS only. But there are people जो टेस्ट देने के लिए इंग्लिश नहीं सीखना चाहते। They want to learn it for their personality development or maybe for their professional development. Especially in our kind of areas, अगर किसी को इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना आता है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाती हैं। बहुत केसेस में क्या होता है, चाहे आपको नॉलेज कितनी भी ज़्यादा हो, बट जॉब उसको मिल जाती है who is good with English. मोरओवर डेली लाइफ में भी अगर किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, उसको ज्यादा वैल्यू दी जाती है। अभी सोशल मीडिया का टाइम है, सर्टेनली इंग्लिश आने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है एंड यू नेवर नो आप क्या अचीव कर सकते हैं उस कॉन्फिडेंस को यूज करके। हेयर विद मी डेली स्पीकिंग सेशंस, वीडियो सेशंस की हेल्प से आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपकी फ्लुएंसी के ऊपर वर्क किया जाएगा। नॉट टू फॉरगेट आपकी वोकैबुलरी कलेक्शन पर भी आपको जब रोज यहाँ बोलने का चांस मिलेगा, यू विल गेट सो मच कॉन्फिडेंस और आपकी नर्वसनेस खत्म हो जाएगी। एक स्पीकिंग सेशन का डेमो तो आपने देख लिया है, एक और एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं टू शो हाउ यू विल लर्न इन माय क्लासेस। लेट्स स्टार्ट प्लेइंग वर्ड स्टोरी सर्कल। वेलकम टू फ्लुएंट फैक्ट्री, दिस इज सान्या शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू perform an activity, word story circle, to see how you can build up your vocabulary using this creative game. आज हम word story circle के साथ अपनी vocabulary को enhance करेंगे और अपनी quick thinking के ऊपर work करने वाले हैं. Okay? Let's start this activity. So what are we going to do in this activity? Word story circle. इसके आपको word से ही पता लग रहा होगा कि क्या करना है. Word story circle. What we are going to do is we will start a story. मैं आपको फर्स्ट सेंटेंस दूंगी स्टोरी का और आपको उसमें वर्ड्स ऐड करते जाना है टू कुक अप अ गुड स्टोरी, राइट? यू कैन डू दैट. तो जब भी हम किसी से भी बात करते हैं, whenever we are having a conversation, so there is a thing called कि उसकी एक सेटिंग होती है. There is always a beginning, there is the content in between and there is an ending. ऐसे ही होता है. So in the same manner जब आप स्टोरी बना रहे हैं तो तब क्या होता है? There are factors. सबसे पहले उसमें क्या होता है? स्टोरी सेटिंग करनी पड़ती है. You need to do story setting. How you do it? You create the main character and where they are and what they are doing. This is the elements you can add in the story setting. कर सकते हैं? और क्या होता है स्टोरी में? The other thing you do is you add
characters into the story. You add some characters into the story to make it more engaging, right? To make it more fun, right? So the story with the single character is boring, right? It becomes boring somehow. So when there are more characters into the story, it becomes interesting. Next, the major thing that should be there in a story is a twist, right? It makes it fun. Add some twist into the story and then you can add the ending. It can be happy or it can be sad ending. Okay, so let's start our today's story. Once upon a time there was a magical Once upon a time there was a magical dragon. Okay, nice child choice. Dragon, you said? Dragon. Once upon a time there was a magical dragon. Okay, so now let's continue the story. कैसे करेंगे? How we will continue the story? The dragon was not your typical dragon. It was a The dragon was not your typical dragon. Anybody? It was a Rainbow. rainbow. Okay, nice. So I'm gonna write the story. Once upon a time there was a magical, आपने बोला, dragon, right? The dragon was not your typical dragon. It was a, what the word you said? Rainbow. Rainbow. It was a rainbow dragon. Okay. So the rainbow dragon loved to explore the enchanted. Can you fill it with the word? Forest. Forest. Nice choice. So the rainbow dragon loved to explore the enchanted forest. So there is a vision in your mind now, right? Can you imagine the setting? There is a dragon and the dragon is rainbow dragon. You say rainbow dragon means maybe it is full of 7 colors, right? Now the dragon is exploring the enchanted forest. Now he is exploring it. Okay, so let's continue the story by adding more characters into it. Okay, so the dragon encountered का मतलब क्या होता है? Met. Okay, met. The dragon encountered a unicorn. Okay, the dragon encountered a unicorn. Okay, nice choice. And let's add more into the story. The unicorn had the special powers to. The unicorn had special powers to add any special power, whatever you want to have someday in your life. Teleporting. Okay, nice choice. The unicorn had special powers to teleport. Nice word. Okay. Teleport. What is the meaning of teleport? Can anybody tell me that? क्या कोई बता सकता है teleport का मतलब क्या होता है?
Go in a future or past. Very good. That means the ability to go in the past or in the future. कि आप किसी भी टाइम जोन में जा सकते हो, उस एबिलिटी को क्या कहते हैं? Teleported. Very good. Okay. So the unicorn had special powers to teleport. Now add a twist into it. Add something bad. Add a villain into the story. Okay. So then they met a mischievous somebody villain. Dinosaur. Okay. They met a mischievous dinosaur. Okay. Mischievous means, what is the meaning of mischievous? Mischievous का मतलब क्या होता है? Anybody? Dangerous. Mischievous. Mischievous means naughty. Somebody cunning, somebody naughty. Okay. They met a mischievous dinosaur. And the dinosaur stole the unicorn's ability to fly. Yes, unicorns can fly, right? Unicorns fly कर सकते हैं. So, the dinosaur stole the unicorn's ability to fly. Okay, now our special characters, they had a problem. They are faced with a problem now. So, how will they fix it? How will they fix it? What do you think? Anybody with the ideas? How will they fix the problem? The dragon helped the unicorn. Very good. The dragon can help the unicorn to gain his powers back. Right? So that's the ending we can have. So this was all about the word story circle. What happened? We learned so many new good words. How? I was giving you a story, right? I was reciting a story for you, and then you were adding good words yourself. And what you were learning? You were learning how to quickly think about the ideas and how to do the teamwork. Now, let's wrap this demo session with the conclusion that ये classes उनके लिए हैं जो actually serious हैं अपनी English game को change करने के लिए. I only want to utilize my precious time with students जो खुद serious हैं और जिन्हें लगता है जब उन्हें personalized attention मिलेगी, they can definitely change their bands for good. Now, coming up is the offer for all of you. If you will register before 31st, you will receive 20% discount in the program you want to enroll in. If you have any questions, feel free to ask please. I am more than happy to clear your doubts. अगर आपको लगता है आपको प्रोफेशनली खुद को डेवलप करना है, I believe this is the first step जो आप ले सकते हैं खुद को और career wise successful बनाने के लिए. For the IELTS students as well, this is one of the best opportunities to get individual attention जो आप deserve करते हैं. If you feel genuinely interested, आप classes के लिए sign up कर सकते हैं. Thank you so much for your time and patience, and I hope I managed to make you learn a thing or two today. So, thanks a ton. Good day, everyone.